हे क्रिएटर्स, इजी क्रिएटर हब में खुशआमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैनवा की मदद से बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि आप ना सिर्फ एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बुक बना सकते हैं जिसे बच्चे बहुत पसंद करेंगे, बल्कि आप इसे Etsy पर सेल करके अपना छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम बुक का कवर डिज़ाइन करेंगे और याद रखिए, आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना क्योंकि हर स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एंड में आपको एक परफेक्ट एक्टिविटी बुक मिलेगी।
अब चलिए डिज़ाइन करते हैं हमारा सेकंड पेज। ये पेज थोड़ा स्पेशल होगा क्योंकि इसमें किड्स अपना नाम लिख सकते हैं और साथ ही कलरिंग भी कर सकते हैं। इस तरह उनका एक्टिविटी बुक के साथ पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। अब चलिए एडिट करते हैं अपना नेक्स्ट पेज। इस पेज में हम किड्स के लिए एक सिंपल और फन पजल ऐड करेंगे। पजल बच्चों के लिए सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं होता, बल्कि उनकी सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है।
अब चलिए डिज़ाइन करते हैं अपना नेक्स्ट पेज। इस पेज पर मैंने लिखा है A फॉर एप्पल। यहाँ बचाए लेटर A ट्रेस कर सकते हैं और साथ ही एप्पल की आउटलाइन को कलर भी कर सकते हैं। इस तरह उनकी लेटर रिकग्निशन और क्रिएटिविटी दोनों डेवलप होती है। आज और ये है हमारी एक्टिविटी बुक के फाइनल रिजल्ट्स। सिंपल, क्रिएटिव और बच्चों के लिए बहुत फन। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।